अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे और खुद भी मिलेंगे जो कि मेरा ख्याल में हम सबके बहुत ही फेवरेट हैं। और वो कौन से बताएंगे? मौसम टाइटल है एक्सप्लोरिंग आइकॉनिक गलीज ऑफ बेंगलुरु विद लकी अली, कामया जानी तेरी गली में कर्ली टेल्स, और वो पर्सन है लकी अली। यस भाई, मुझे इनके गाने बहुत बहुत पसंद है और मैंने वैसे इनका बहुत खूबसूरत है। मैंने वैसे इनका जो पहला गाना सुना था वो था आबिजा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम इनको इंटरव्यूज में देखा है। तो चलिए आज देखते हैं इनकी वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलग में व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करते रहें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Anna, coffee beko. अन्ना Anna on the coffee. Like this. You basically take it like this. And then तो you डोसा put it ना? like this. And then bismillah. चाय मल्लेश्वरम। गरम गरम गुलाब जामुन बनाओ। Good morning from Bengaluru. I love this city. Maybe I know good it's the है। Silicon Valley of India and the IT hub and all of that. But for a foodie and traveler like me, मुझे तो बस अच्छा खाना चाहिए. But I think a best way to know a city is when you roam around with a local. And my local guide for the day in Bengaluru is the ace singer and musician Lucky Ali. So let's go and meet him. So Lucky stays in this amazing farmhouse surrounded by lots of greenery, away from the hustle bustle of the city. So before we begin our culinary journey in Bengaluru, let's go pick him up and find out his favorite spots in the city. ऐसे तो यहाँ के पहेली हर कोई है, अनजाने के खेल में रही हम मजबूरी। सवालों की कहानी, जवाबों की कमी है, दिल के आईने छिपे हैं मायने के, जो खोया हुआ वो मिला यहाँ, जो सुना वो अनसुना, हम कहा ही कह गया, ये मोहब्बत जिंदगी से ओ मोहब्बत है, ये मोहब्बत जिंदगी से ओ मोहब्बत है, मोहब्बत मुर्गों की आवाज आ रही भी जैसे पीछे घूम भी रही है। बहुत अच्छी लाइन That थी। was so beautiful that I didn't want to interrupt you. Thank you. Is that your new song that's coming out? That's the new song that we're releasing. But you know, I'm quite amazed looking at this gorgeous farmhouse that you have. For how long have you been living in Bangalore, and is this the kind of life that you've always lived? I've been here since 1969. Yes, of course, we've always lived out in the open 1969. spaces. My dad got this place when I think in 1969, and the family has just been here. It's just been a work in progress. Can I tell you something? I'm getting an original rock star vibe from as I sit right next to you. That's the last thing I wanted to become as a rock Oh, really? star. Yeah, we're musicians. We tell stories and we learn from our own stories because they're always a work in progress, because nothing's ever completed, even after it's completed. So you know, I took an early morning flight today because Yeah, welcome to Bangalore. I forgot to say that. Thank you. And I've heard people in Bangalore love to have their breakfast, and they finish all the breakfast by 11, 12, even at the most iconic restaurants. Yes, earlier than that, in fact. Before school, we'd go to this place called MTR in Lal Bagh. But we're going to another place, I think, today. Yes, it is. So I'm going to compare what MTR was to us and what CTR is today. And then I have a couple of my favorite places. One is Koshi's. The owner and I went to school, in the same school, Bishop Putnam.
and I bought my first pet snake from him. He sold me a small python, which is here on the farm even now. Really? People see it, yeah. Wow. That was about 40, 50 years ago. Everybody saying good morning to you from the farm, but now I think it's time to go for breakfast and see Bengaluru through your eyes. Okay, great. Let's go. Basically, we don't want to develop this place. We just want this to be like a forest, a growing forest. We have a lake, we have cows. kya? Those are Kuan? merino sheep. कुआं तो नहीं The लगा chickens and roosters are the alarm clocks. And I'm convinced you'll actually bump into goats and ducks more than human beings. Look at them all, just clustering in corners of this farm. And right from the spot, Lucky claims that he's gotten a glimpse of a UFO. They come sometimes, they stop here. UFO? Yeah, Really? yeah. मुझे कहीं ऐसे बोलता ना समझ नहीं आती यकीन करो या नहीं Beta, we'll sit in the car and we'll head. But the traffic scene in Bangalore is quite crazy. At the moment, because I think people are buying a lot of cars and all that stuff, and now the metro's coming up, so that will bring the Yeah. volume of traffic down. So they're doing a pretty decent job here. And I'm very grateful to the Almighty that Bangalore has been the Wow. most beautiful experience of my life. Everything came from here. Yeah. The music as well. एक चीज़ है, Bangalore is still Bangalore. आप कुछ भी बोलो उसको. क्या जानू You see him shopping for fruits in the middle of a busy street in Bangalore. Now that's what we like. Seeing a celebrity as a commoner, and now I'm going to go and enjoy breakfast with Lucky Ali at CTR, which is an iconic breakfast spot in Bangalore. Thank you, boss. Thank you. CTR or Central Tiffin Room is a family restaurant that tops the list for every foodie. Bene, Bene masala, butter masala, masala dosa, butter. you'll have a masala dosa. Yes, benne. Benne means Yeah, butter, yeah. right? Yeah, I'll have that. And I want kharabat. Kharab. And I want a coffee. You know, I can already smell sambar, and for me, my go-to breakfast is idli, vada, and sambar. What about you? Yeah, for me, that's comfort. You know, South Indian breakfasts are comfort. Kharabat, try some. Kharabat is basically upma. Yeah, Okay, it's like upma. it is upma. Then we have coffee that we take like this. Coffee is grown in food. It's freshly ground and it has to be filtered in order to. It's not like instant coffee. Yeah. So this is like the real coffee. अच्छा पीने का तरीका भी है So I saw that you also speak Kannada very fluently. Not fluently. I mean, I live in the States, so I better know. I should know my way around. We're Punjabi, so from my mother's side. Okay. So thodi Punjabi aandi hai. Then I know we're Tamils from my father's side. So Kunjum Tamil in Hyderabad also my grandmother. And then Maharashtra. Of course. That's Mathrubhumi. Yeah. We do benne dosa. Bene means butter, and oof, look at that generosity. This is a fluffy yet crispy dosa, and this masala filling is just a flavor bomb. देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और क्रिस्प चेक करो A thumbs up going to the owner. Sir approves of the benne masala dosa at CTR. Clearly. Very good. And this is amazing because he's kept it traditional and he's kept it clean and good, you know. And I'm going to have another coffee. Anna, one coffee beko. Inna one coffee. Filter coffee. If I have to get by in Bangalore and if I need to know one line in Kannada, can you teach me? Namaskar. Namaskar. Very Namaskar. simple. Yeah. Namaskaram. Yeah, namaskara, sir. Or, you know, sir is like sir. They address everybody like sir. They're very, generally, Karnataka people are very gentle. I think we should go to Koshi. Koshi? Prem Koshi is the guy who's running it now. Prem was my schoolmate in St. Mark's Road, quite on the same road. He comes from a very old family of
bakers and restaurateurs and that kind of camp. So how were you in your school? Were you like very studious or? No, it depended upon the teachers. Like, I mean, if the teachers were good, then I studied well. We had lots of good fun as kids. Yeah. Basically, it was about just getting out cycling and, from our school going all the way to Nandi Hills. Then there is Bannerghatta National Park. But in that same park, we used to bunk and from school, Airlines Hotel aata hai. This was the other place that we came to for idli and vada and all that stuff. My brother was banned from there. The reason why he was banned from there, they used to offer something called the unlimited thali. So he and his friends, Morris and Guna, they went and had lunch there, and 300 puris they had. What? 300 puris. That owner came and he says, "You all are banned from my house." And he complained to my father, shameless. That's good. Puris. This is the great coffee place. Sir, namaskar. He used to grow and he used to have these pet snakes, All animals. Yeah. Actually, He has our the house. python you gifted Yeah, him. You know the python that you gave me? He's running It's around on the the farm, yeah. That's wonderful. Come sit, Papa. Koshi's. It looks like a very, very pretty place, and it seems like it has retained its old world charm. What's your story? क्या कहानी है Koshi's की? Hey, it's a family run thing. Prem, who's a friend of mine, he runs this now. Is it one of the hot spots for romantic dates also? Well, I dated my girlfriend and we used to sit down here somewhere. Really? And what would you eat? Same thing. Or what would you treat her with? She'd have a coffee or a lime juice or something. It was just a place that anybody came and sat, and menus the same. The tables and chairs are the same. I would say even the crowds are. Prem! We are the Nakra masters that grew up together in a school called Bishop Cotton. Bonds you paid in school, no? That can never be sort of negated on any level, right? So we have remained friends. We also used to dance and sing in school, and he's gone up to stardom, right? So it's good. In some of the rough days, he would come and sit very, very quietly in jewel box. I think he was trying to do carpet business at one time, yes. And then I said, "Lucky, listen." He said, "Prem, where can I get a good guitar?" I think I sent you to this fellow, no? On MG Road. I said, "Lucky, try that." And that one moment, magic moment, like they say, no? You have a dream, and you actualize it. Here's the baby. That's the magic man. Okay, chicken malakhani soup, lamb sandwich. Okay, and I will bring you my little favorite for both of you, just to keep the smile on your face. Okay? Okay, thank you. Thank you. Clearly, you have a lot of fond memories, and he did mention about cleaning dishes. At one point, you were also cleaning carpets, right? Carpets used to bore me, because they didn't know how to sell. I knew how to buy. Yeah. So whatever I bought, I sold for a loss. So business is not for me. Oh, Baba. Keep your beauty smiling and having a nice moment. Smiling. Thank you, brother. Oh. Says the name of the soup? Malgateni. Malgateni. Mulgatunga. They're two different names. Mulgatunga means hot water. Mulgatunga. It is the comfort food you need on a gloomy rainy afternoon here in Bengaluru. As for these sandwiches and smileys, the food spread here is childhood on a plate. For me, I just wanted to feed my family. Actually, that's why I became a singer. Really? I could have been anything. I've seen that most singers are very romantic because most songs are based on love. How romantic are you? Romance is a fleeting thought. There's a romance with life because it's fleeting. It's not going to be there forever. Do you remember your first concert? Singing is one when you're singing alone and in isolation, but my first real concert was in a place, Rang Bhavan. okay. And I was overwhelmed by the audience singing. So I just shut up and then listened. I've been loving to hear all your stories so far, and I hope our culinary journey continues while we finish this. Where are we headed next? To the mithai shop. So there is this kulfi place here. And is this also very old? Yeah, he's about 40 years old. Sir, 40. kulfi. Malai kulfi. Malai. How many, sir? One kulfi. I'll have kesar bada. Yeah, you have. I won't. Thank you. Yummy.
passing by Bangalore. Lucky sir just wanted to buy some own perfume, as you may know it, Arabic perfume. So just going in, joining him there. अजमन इधर तो नहीं ले रहे. You saw this shop and it's not possible that I would not come to this. You always prefer own over इधर है. Yes. I prefer oil over. oil. अच्छी मार्केट है. साफ सुथरी बहुत ज्यादा है. भगत How राम long have you been coming here? Since our childhood, we used to come. बचपने से हम लोग आ रहे हैं. Yeah. My father. Oh, okay, okay. Yeah. Hello. Yes, family. मीठे के बिना खाना अधूरा है and we are here at 74-year-old Halwai to indulge in these plates of salivating gulab jamuns, an evergreen sinful and sweet dessert. You can smell so much jalebi and gulab jamun here. What's your favorite? Gulab jamun. The best here? In the world. In the world, not even in Bengaluru, in the world. You were right. Best. So must try gulab jamun at Bhagatram whenever in Bengaluru. Highly recommended. Have you enjoyed your gulab jamun? Trying this after how many months or years? 2 weeks. Oh! So you're quite a regular here. Okay, we're going to play a fun game with you, which is called this or that. You have to choose one, okay? Head or heart? Beaches or mountains? Both. City life or countryside? Of course, countryside, but Yeah. I like going to the city sometimes, like today. Musafir or Banjara? What term do you like better? Rahi. Touring with your band or family trip? राही. Both. I mean, the band is, they're like brothers in arms, and my family is my family. Books or film? Books and films. I want to know about your love for travel. You know, you spoke a lot about how travel can teach you a lot. Well, when we go to a new place, it's always about getting to feel the energy, and the people are the energy. So when the energy is inviting, you want to explore. Do you have any favorite places that you really like to explore? I mean, I'm exploring. We've been to Meghalaya. We're going to so many beautiful places in India. Goa is so unexplored and beautiful. You know, so the Western Ghats. There's lots coming here. This is Malpua with Rabdi, right? Yes. Little. You know, it's so amazing the way you meet everyone. I mean, all of them are excited to see you, but I see equal enthusiasm from your side as well as you're meeting all of them. I like people. Yeah. Did you feel tired of so many people coming to you, taking pictures all the time? I appreciate it, and I'm very grateful to you all. You know, that the respect comes from him, Yeah. love comes from him. So, and you're obliged to give it back to them. You know. You know, it's been amazing exploring Bengaluru with you, trying out this delicious food from gulab jamun to penne butter dosa. It's been amazing. Thank you so much for showing me around. And really looking forward to the new song. Yes. And what's your plan after this? Rehearsal. Rehearsals for a concert tomorrow? Oh. Delhi. दिल्ली. Wow. भाई सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा उनके गाने की, जो उन्होंने स्टार्टिंग में गाया, उसके लिरिक्स और उसे जिस तरह की प्लेस पे बैठ के गाया जा रहा था ना, ऐसी जगहों पे गाने सुनने का बहुत मज़ा आता है। वैसे मैं तारीफ करना चाहूंगी उनकी पर्सनालिटी की, बहुत ही डाउन टू अर्थ लग रहे हैं मेरे को। हाँ, सिंपल तो हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, उसकी एक एनर्जी होती है जो आप दूसरे बंदे में ट्रांसमिट करते हो जब आप उससे मिलते हो। इवन कि जब आप
हैंडशेक करते हो या किस तरीके से उसको वेलकम करते हो, ये सारी चीज़ें बड़ी नोटिसेबल होती हैं। सो मुझे कम्प्लीटली वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगे हैं, और मुझे लगता है कि शायद ऐसी पर्सनालिटी से आप अगर उनकी लाइफ एक्सपीरियंस और उनकी स्टोरी सुनते हो ना, तो आप कभी थकते नहीं हो, ना ही आप कभी बोर होते हो। यार मेरा ख्याल है कि जिन्होंने जिंदगी जो है ना एक बहुत अच्छे तरीके से इनके डिफरेंट लोगों के साथ काम करके गुजारी होती है, डिफरेंट जगहों पे गुजारी होती है ना, उनके पास स्टोरीज, उनके पास बताने को इतना कुछ होता है ना कि वाकई आप उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनते हुए नहीं थकते। क्योंकि अगर एक म्यूजिशियन की बात करें, एक्टर की बात करें, या किसी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें जिसकी डिफरेंट सिटीज़ में पोस्टिंग हुई होती है, तो क्योंकि डिफरेंट लोगों के साथ काम किया होता है, तो उनका जो एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, ज़िंदगी जो है वो यानी कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, लोगों के साथ किस तरह रहना है, वो बहुत ज़्यादा जो है काउंट करती हैं। अभी मैं लकी अली सर की मैं बात करूं तो उन्हें जब मैं देख रहा था जिस तरह लोग उनके पास सेल्फी के लिए नहीं, पिक्चर के लिए आ रहे थे, तो मुझे एक चीज़ यानी कि उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया कि भाई नहीं आप तस्वीर नहीं ले सकते। और जहाँ पे भी गए ना, वहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि लोग जो जैसे हम देखते हैं ना भाई सेलिब्रिटी को देखते हैं तो एक राउंड बनाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ भी मुझे देखने को नहीं मिली। भाई मुझे तो उनका जो फार्म हाउस है वो बहुत अच्छा लगा। आई मीन he's living, it's like you are free soul। तो वो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस दुनिया में इस तरह से रहते हैं। अदरवाइज हम लोग बड़े ना बाउंड रहते हैं कुछ चीज़ों के अंदर कि हमें इस तरह का घर और इसी तरह का रहना सहन करना है। सो लकी अली सर का मतलब मैंने ऑनेस्टली बोलूं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह से मतलब नेचर के इतने करीब, और जिस तरीके से मतलब उनका एक फार्म हाउस है और उनकी फैमिली जिस तरीके से रह रही है। सो आई वाज लाइक कि जो आपको मज़ा इस तरीके से, क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होता है उसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि फ्रीली हर चीज़ को लेना, उनको वो एक फ्रीडम चाहिए होती है सोचने की, उनको बाउंड नहीं किया जा सकता, ना उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसी चीज़ में। सो मुझे लगता है कि उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनकी बड़ा अच्छा एक ये स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का। और बाकी जो खाना उन लोगों ने एक्सप्लोर किया और हम लोगों को दिखाया भी, तो भाई मैं पहले बात करना चाहूँगी डोसे की, क्योंकि उसको देखकर तो वाकई में मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि हर शहर के एक ट्रेडिशनल स्टाइल आपको नज़र आता है, उसकी सीटिंग में, उसके क्रॉकरी में, उसकी सर्विंग में। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि जिस तरीके से स्पेशली जो कॉफ़ी थी वो सर्व की गई, यानी कि जो कटोरी सी थी उसमें डालकर, फिर मतलब मैं ये चीज़ें यहाँ पर नहीं देखती, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं कि कुछ नया, कुछ ऐसा जो कि आप कि कल्चर को आप किसी ना किसी तरीके से जिंदा रखते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हमारे जो बड़े थे वो क्या करते थे, ऐसे प्यालियों में चाय डालकर, जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे वो, ये मेरा माइंड रीडिंग कर रही है आज। हाँ, माइंड रीडिंग कर रही है। तो वो क्या करते थे कि प्यालियों में डालकर तो वो चाय पिया करते थे, कप्स नहीं तब हुआ करते थे, या फिर जैसे हम लोग ऐसे करते ना सॉसर में डालकर तो पी लेनी, चुस्कियां ले लेकर, ये भी मैंने करते हुए देखा है। बट प्याली वाला कल्चर तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा था पहले, जो कि अब खत्म हो चुका है। यार हम अगर अपने बचपन की ही बात करें तो हमें भी अपने बचपन में जब हमने कुछ यानी कि रस खाना होता था या बाकर खानी होती थी, तो प्यालियों में ही हम जो है वो डालकर उसे, नहीं वैसे ऑनेस्टली बोलूं मुझे याद है प्याली एक ना, वो एक मतलब स्पेसिफिकली वो बने होते थे प्याले जो चाय हुआ करते थे, याद है व्हाइट कलर का उसका, बिल्कुल मुझे याद है, और कलरफुल होते थे, बिल्कुल मुझे बिल्कुल याद है। मैंने बचपन में जो है उसमें चाय भी पी हुई है और उसमें बाकर खानी भी मैंने जो है डुबो के खाई है। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है आप जब जाते थे ये दूध दही की दुकान पर, ठीक है ना, मैंने अपने मामू को देखा हुआ है, अब वहाँ पे भी खत्म हो चुके हैं। तो हम लोग भी जब बचपन में याद, अम्मी दूध लेने जाती थी तो दही के वो हमें पूरे प्याले लाया करती थी, बिल्कुल इसको और मेरे बड़े भाई को। तो हम लोग, वैसे मुझे ये चीज याद, मुझे ये याद है, वो मुझे अच्छे से याद थी कि डेली वो हम लोग को दही का प्याला जो है ना वो खिलाया करती थी। और क्या कहते हैं, मुझे मामू का याद है कि मामू जो है वो जो है लेकर जाते थे और वो खाते थे चीनी डालकर, और इतना बड़ा प्याला
उन्हें खा जाना करना। फिर मुझे जो यहाँ पर जो आपको आम दूध दही दुकान की जो दुकान होती थी उस पर सुगात मिलती थी, पेड़े वो बना कर रखते थे। अब तो वो भी बहुत कम हो गए हैं, वो भी बहुत मजे के होते थे। तो वाकई एक कल्चर जो है वो जो था वो खत्म होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि लॉन्ग टर्म सिर्फ चल सके, यानी कि स्टील के बर्तन आ गए, वो लोगों ने रख लिए। जो एक चीज थी वो खत्म हो चुकी हुई है। हाँ, मुझे जरूर लगता है कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में ना खत्म कर दी गई ओवर द टाइम, जो कि बिल्कुल भी गलत है मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम इज कि आपको ट्रेंड इस तरीके से किया जाता है कि आपको अच्छी क्रॉकरी और ग्लास शीशे का इन चीज़ों में होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो भी अपने कल्चर को किस तरीके से याद रखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑनेस्टली पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में, कि इंडियन लोग अपने कल्चर को याद रखते हैं। और सेकेंडली मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मतलब जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट देते हैं ना आर्टिस्ट लोगों को, वो बहुत अच्छी कमाल की चीज़ है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में हम लोगों की कम देखने को मिलती हैं और इंडिया में हमें हमेशा देखने को मिलती हैं। और आर्टिस्ट जो है इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भाई जिस मुल्क में वो रह रहा है वहाँ के लोग उसकी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ जो होती है ना, फिर जब आने वाली जनरेशन जब देखती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होती है। मैं अगर लकीली सर की बात करूं तो इन्हें मैंने फर्स्ट टाइम जो है सुर मूवी में जो है मैंने देखा था। वो मूवी के गाने जो है बहुत ज्यादा हिट थे, सारे गाने। वो मूवी भी ऐसे अच्छी थी। और वैसे मेरा ख्याल है उससे पहले वो गाना आया था, एक पल का जी न कल हो ना हो, अगर वो पहले कल होना होगा नहीं, वो कोई और मूवी थी। हाँ, कल होना नहीं, सॉरी कल होना नहीं, सॉरी कहो ना प्यार है, बिल्कुल उस मूवी का गाना है। बिल्कुल वो मैं शायद पहले आया था, लेकिन मैंने सुर मूवी से जो है इन्हें जानना शुरू किया। इनकी आवाज बहुत खूबसूरत, बहुत ही यूनिक है। पता नहीं कुछ अजीब सा है इनकी आवाज में, अजीब मतलब कि अच्छा वाला अजीब, इन अ गुड सेंस, कि जो आपको ना सुकून देता है यार। वो हम अक्सर बात करते हैं ना, कई आवाजें ऐसी होती है जिन्हें आपको सुन के सुकून मिलता है। हाँ। उस तरह की आवाज। और भाई जो 300 पूड़ियों वाली बात थी, वाकई में वो हैरान कौन थी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सुना कि कभी किसी ने इतनी पूड़ियां खाई हो, क्योंकि पूड़ियां अच्छी खासी हैवी होती हैं। हैवी होती। मैंने बस यहाँ पे एक हमारे ही जानने वालों में है ये सुना है कि वो एक दफा घूमने फिरने गए थे, वहां पे उन्होंने एक टाइम पे 21 रोटियां खा ली थी, सादी रोटियां जो मिलती हैं। तो हम वो सुन के जो है बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। तो आप ये सोचे कि 300 पूड़ियों का सुन के हम जो है वो कितना ज्यादा हैरान हुए होंगे। मे भी शायद कोई शर्त वगैरह लगी हो आपस दोस्तों में, लेकिन फिर भी 300 पूड़ियां बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऑयल होता है तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। एनीवे ओवरऑल बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है लकीली सर के हमें बहुत कम इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं एज ए सिंगर, आपको कैसे लगे और आज उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा, और बचपन में क्या आपने उनके गाने सुने हैं तो कैसा लगता था आपको, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।